Good morning, dear students. Hope you are well. So let's start our discussion for the antenna array. For antenna array. Dear students, in our previous discussion, we have started our discussion for the types of antenna. तो वहाँ पे हमने 4 तरह के एंटीनास के बारे में मेंशन किया था. That is wire antenna, either it may be monopole or dipoles, horn antenna, array antenna and reflector antenna. फिर हमने फिगर भी डिस्कस किया था where we come to know the satellite antenna coverage zones and wire antenna. और मैंने आपको वायर एंटीना के बारे में बताया भी था कि जनरली अगर हम टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग और कमांड सिस्टम के लिए जाते हैं तो देयर वी यूज, क्योंकि ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, ये जो अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि सबके केस में हम वायर एंटीना ही यूज करें, या सबके केस में हम हॉर्न एंटीना ही यूज करें, या सबके केस में हम डायरेक्टिव एंटीना या ओमनी डायरेक्शनल या जो बेसिक कैटेगरी है वही हम सिर्फ यूज करें. डिपेंड करता है. एक ही सैटेलाइट 2-3 तरीके के एंटीनाज हो सकते हैं उसमें, क्योंकि कहीं गेन को यूनिफॉर्मिटी रखना है, कहीं गेन को कुछ अलग वैल्यू पे रखना है. तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स पे. तो उसी प्रकार से वायर एंटीना को हमने डिस्कस किया कि जनरली अगर TTNC के बारे में हम देखें तो वहाँ पे इस वायर एंटीना को यूज़ किया जाता है. द सेकेंड थिंग वाज अबाउट द हॉर्न एंटीना. तो हॉर्न एंटीना के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी माइक्रोवेव सिग्नल का ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होना है तो देयर वी गो फॉर द हॉर्न एंटीना, जहाँ पे एक पोर्शन वेव गाइड था and the another one was flared metal horn. So from that discussion we are having a good knowledge about this wire and horn antenna. So let's start our discussion for the antenna array. Generally we know the meaning of array, collection of एलिमेंट्स. जब कभी भी किसी के कलेक्शन की बात हो, सेट ऑफ बात हो, तो जनरली वी से दैट इज व्हाट इट इज अ एरे. सो फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फेज्ड एरे एंटीना is of more interest. Let me add, this is an important point for satellite, because our subject is satellite communication. So we have to go or look into about this satellite communication. For satellite communication, phased array antenna. Phased array antenna is of more interest. Is of more interest for instance, अगर हम देखें जनरली तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अब अरे एंटीना जो है ये भी कई तरीके से होते हैं. इन दैट बेसिकली जो फेज्ड अरे एंटीना है दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दे आर बेसिकली जो एंटीना अरे है दे आर बेसिकली बेस्ड दैट on a principle
that a pointable focused beam can be formed by simultaneously phase shifting in electromagnetic carrier field in n separate branched and radiating each shifted component as the output on an individual radiator, and that individual radiator which we are talking about, that individual radiator, it may be either dipole or horn, etc. That individual radiator. So the resulting radiated pattern will reinforce in some direction and interfere in others. So the net results being a combined beam data points in a direction determined by the phase shifts used. By properly selecting the phase shift, what we are going to do, the directivity of the beam can be oriented. If you are selecting the correct phase, the directivity of the beam can be oriented in a given direction. Hence, a phased array can theoretically produce beams in arbitrary off-axis direction. So, in the case I have told you for satellite communication we go for this phased array antenna. So theoretically, if we say that phased array produce beams in arbitrary off direction, so the array gain increases with the square of the number of array elements, and thus high gain is achieved with large arrays. Dear students, when a reflector is placed between the dipole array, radiation occurs in one direction. If reflector is placed behind the dipole array, the radiation occurs in one direction, and that will be basically clear by this diagram. Let me draw that diagram. This is what? This is basically dipoles. This is a reflector. And what are these? These are basically, this is antenna. A set of dipoles for using, factors for using that are, this is what an antenna array. These are the minor lobes, and these are the major lobes. This figure is basically a field pattern of an antenna array. Got it? These are the basically field pattern of an antenna array. So what I have told कि यहाँ पे ये आपके एंटीना है, जिसको हम एंटीना एरे कह रहे हैं. ये आपके डाइपोल्स हैं, एंड दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टर. यहाँ पर रिफ्लेक्टर है. मैंने आपको बताया कि व्हेनेवर a reflector is placed behind the dipole antenna, when the reflector is placed behind the dipole array, radiation occurs in one direction, this way, and that is what's shown in the figure, जहाँ पे ये minor lobes और major lobes मैंने बनाया. So dear students, basically
there are two types of, basically there are two types of antennas, two types of antenna array are there. Two types of. What are those types? Those are parasitic and driven. Parasitic and driven. The difference, the antenna which is shown in this figure means this one. This is basically the example. This is the example of parasitic array. Parasitic. This is the example of parasitic array. Dear students, reflector is not directly connected to the energy source. This reflector, that is not directly connected with the energy source. Driven arrays in which all the radiating elements are connected to the energy source. मैंने भी आपको बताया कि बेसिकली तो एंटीनास, जो एरे एंटीना की हम बात कर रहे हैं वो दो तरीके के हैं, पैरासिटिक एंड ड्रिवन. तो जो पैरासिटिक है, अभी मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्टर है वो डायरेक्ट सोर्स से नहीं कनेक्ट होते हैं. एग्जाम्पल पैरासिटिक एंटीना का बताया जहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको दिख पा रहा है. तो ये जो रिफ्लेक्टर है डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता है एनर्जी सोर्स से, क्योंकि एनर्जी सोर्स से ही जो है ये आपके लूप्स का फॉर्मेशन होगा और फिर जो है वो हम बाकी चीज़ें करेंगे. तो जो रिफ्लेक्टर है वो इस केस में, जो पैरासिटिक है इस केस में डायरेक्टली नहीं एनर्जी सोर्स से कनेक्ट होता. वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ड्रिवन अरे, क्योंकि यही दोनों इनका पार्ट्स है. तो इसे ड्रिवन अरेज in which all the radiating elements are connected to the energy source, all the radiating elements, which is have some smaller losses than parasitic arrays, while retaining some of the narrow beam characteristics. So let me write that the reflector is not directly connected to the energy source. That is not directly connected. So driven arrays in which all the radiating elements are connected to the energy source. Have smaller losses than parasitic arrays, while retaining some of the narrow beam characteristics. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्टर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एनर्जी सोर्स,
ड्रिवन अरेज का हम यूज करते हैं। तो इस वजह से ये दोनों जो है वो बेसिकली ये दो टाइप हो जाते हैं एंटीना एरे के। सो I have told this one is the example of a parasitic array. So parasitic arrays are used primarily as antennas in fire control radars. Got it? This parasitic element arrays, parasitic arrays are used primarily as antenna in fire control radars and other installation such as microwave communication system, and they require very accurate narrow beams. What they require? They require very accurate narrow beams. So parasitic arrays are used primarily as an antenna in fire control. Fire control radar में बात करें तो जो प्राइमरी एंटीना होता है that is what parasitic arrays. और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें which requires or the requirement of it is narrow beams. जनरली वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पैरासिटिक अरेज, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में है, जो एनर्जी सोर्स एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सिंगल डायरेक्शन में है. these are the reasons basically why we go for the parasitic elements. So let me draw a figure of it. बेसिकली एंटीना एरे की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो जनरली इस टाइप का कुछ केस होगा. दिस इज व्हाट लैम्डा बाई टू. This is what antenna. What it? There are dipoles minus plus minus generally. फिर अगर हम देखें here this is one antenna and the length is here itself lambda by 2. यहाँ पे इसके लेंथ की हम बात करें again this is lambda by 2. This is what lambda by 4. अगेन अगर हम डाइपोल्स की बात करें दिस इज प्लस माइनस बात करते स्टूडेंट्स ये itself lambda by 2. This is also what antenna. Here it is plus minus. Got it? And यहाँ बात करें डियर स्टूडेंट्स तो स्पेस कम है तो आई एम ड्राइंग इन दिस वे. प्लस माइनस
plus minus, this is plus minus, and this is plus minus. Area itself, this is what? Lambda by 2, lambda by 2. At here itself, lambda by 2, lambda by 2. And this length is what? Lambda by 6. This is what? Also antenna. And if I draw a pattern for these, तो pattern जो बनेगा, that will be different in this way. This is what? Major lobe, and these are the minor lobes. अब ये लोब कैसे बढ़ गए? डाइपोल हमने यूज किया है, that is by the diagram. We'll find the difference by this diagram. So ये जो है आपका, this is the figure A है, this is pattern with, this is pattern with 2 elements. This is what? Figure number A. This is pattern with 3 elements. 3 elements. This is pattern. First one is pattern with 2 elements. हमने 2 elements यूज किया है. यहाँ पे हमने 3 elements यूज किया है. और नेक्स्ट वाले केस में what we found कि there are pattern with 4 elements. Pattern with 4 elements. This is figure number C. So this basically figure is different. It is a horizontal array field patterns. Horizontal array field patterns. So हमने देखा यहाँ डायग्राम से कि जब 2 एलिमेंट का हम यूज करते हैं तो वी हैव ओनली मेजर लोब्स. जब हम 3 एलिमेंट्स का यूज करते हैं लैम्डा बाई 2 डाइपोल पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजर के साथ माइनर जो है ये भी आपके लूप्स अवेलेबल हैं. और जब हम 4 एलिमेंट्स का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4, तो जो मेजर लोब्स की विड्थ है दैट बिकम्स नैरो. So this is horizontal array field patterns. Dear students, driven arrays are used basically. I have told you 2 types of parasitic and driven. So the driven array है, driven array that are used primarily as a used primarily as search radar antennas, because extremely narrow beam are less critical than low losses. Dear students, driven arrays are usually made up of number of half wave dipoles positioned and phased so that the desired directional pattern will be achieved.
So what this figure I have drawn here, this figure shows a simple antenna array consisting of two horizontal mounted elements, each a half wavelength long and fed in phase. The resulting radiation pattern is in a direction at right angles to the plane containing the antenna's conductor. So this is, dear students, this is all for the antenna array. And I have told that satellite communication की बात करें तो we use this antenna array. So I hope you understand what I have told to you. If you have any doubt, you can directly ask to me. And I also hope you will take care of yourself. Thank you, students.